नाजरीन, अस्मा भट्ट न्यूज़ ऑफ एशिया से आप सब जानते हैं कि कोविड की सिचुएशन अभी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ही ख़राब बोल सकते हैं। उसी सिलसिले में हम बात करने, अपने नाजरीनों को शेयर करने में, उनको मतलब बताने में आज हम आए हैं डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ कश्मीर डॉक्टर नसारुल-हसन साहब के पास, उनसे ही जानेंगे कि अभी सिचुएशन क्या। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन अभी हॉस्पिटल्स के अंदर क्या है। देखो, सिचुएशन अस्पतालों में वैसे ही है जो कुछ हफ्ते पहले था, लेकिन हाँ ये सही है कि ओवरवेल्म नहीं है, बट हॉस्पिटल बेड्स आर फुल, स्पेशली जो ऑक्सीजन सपोर्ट बेड्स होते हैं वो सारे फुल हैं। हमारे जो आईसीयू बेड्स हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट्स, वो भी फुल है, एंड इवन रेगुलर बेड्स और ऑल्सो फुल विथ कोविड पेशेंट्स। सो हर जगह आप एसएमएचएस अस्पताल की बात करोगे तो सारे जो कोविड वार्ड्स हैं दे आर फुल। तो इसलिए सिचुएशन वही है जो आज से 1-2 हफ्ते पहले था, और केसेस जो की तादाद भी वैसी है, और वी हैव सेम नंबर ऑफ पेशेंट्स जो 2 हफ्ते पहले था वही फ्लो है। 30 से 40 पेशेंट्स with severe bilateral pneumonia, they drop in with dip in oxygen levels every day. So we see large number of people coming with bilateral pneumonia, with drop in oxygen saturation, so needing oxygen, some needing ICU beds, and some of the patients they need ICU settings, but we don't have because those beds are already full. और जहाँ पे हम फिर ICU में इन पेशेंट्स को डालते हैं ICU बेड्स पे, they need a prolonged stay on that few weeks time. So we are short of ICU beds for some COVID patients. That's why overall I think situation is same as we were having few weeks back. और इसकी वजह ये है कि why our hospitals are not overwhelmed the way we see in Delhi or Maharashtra. One reason is over the years Kashmir has learned how to basically be self-dependent. आपने बहुत सारे पेशेंट्स को यहाँ पे देखा होगा, they are at home, even those who require oxygen. यहाँ पे एनजीओज ने बहुत अच्छा काम किया, they have supplied oxygen cylinders, concentrators to them. गरीब से गरीब आदमी को यहाँ पे अगर खाना नहीं होगा इस वक्त सिलेंडर होगा, गरीब से गरीब आदमी को अगर खाना नहीं होगा लेकिन कंसनट्रेटर उसने ख़रीदा है अपना कुछ बेच के। तो क्योंकि कश्मीर में ये बहुत सालों से चल रहा है, डिज़ास्टर्स, मैनुअल, बहुत सारे अनरेस्ट हमने देखा है, उन डिफ़िकल्ट टाइम्स पे भी वी हैव रिजन। सो ये भी एक डिफ़िकल्ट टाइम है। एंड अगर आप लोकल कमिटीज़ की, मस्जिद कमिटीज़, मोहल्ला कमिटीज़ पे, यहाँ आजकल सारे मस्जिद कमेटी वालों ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखे हैं, कंसनट्रेटर्स रखे हैं, इंस्टेड ऑफ दोज वाजवान जो बर्तन हम रखते थे। लेकिन कश्मीरियों ने यहाँ पे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, दे हैव सेट अप एन एग्जाम्पल टू द होल कंट्री कि कैसे आप सेल्फ सफिशेंट रह सकते हो, सेल्फ, और दिस इज़ कश्मीर, दिस आर कश्मीरीज, कि इस वबा में भी वो उन्होंने दे हैव सेट अप एन एग्जाम्पल। दैट इज़ वाई पॉसिबली बहुत सारे पेशेंट्स जो घरों में हैं, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जिनको है वहाँ सिलेंडर्स लेके वगैरह, दैट इज़ वाई यू डोंट सी अस्पतालों में ओवरवेलमिंग। Our healthcare system is sustaining because of this, because of NGOs, because people are taking care of themselves. उसकी वजह ये भी है कि hospital environment people don't want to come for reasons यहाँ पे भी उनको खुद ही करना होता है। जी सर। डॉक्टर साहब, उसके बावजूद बात करें, आपने बताया था कल कि अगर बच्चे जो है वैक्सीनेशन करते हैं तो थर्ड वेव आना बहुत ही मुश्किल है, उसके बारे में? नहीं, आना नहीं, वी आर स्टिल रीलिंग इन द सेकेंड वेव। अभी भी सेकेंड वेव चल रही है। अगर आपने पहली वेव का जो लास्ट ईयर थी तो उसमें एल्डरली पीपल गॉट अफेक्टेड एंड वी लॉस्ट सम ऑफ देम अनफॉर्चुनेटली, एंड इन द सेकेंड वेव विच यू आर सीइंग मोर यंग पीपल गेटिंग अफेक्टेड एंड दे डाइंग ऑल्सो। वी आर सीइंग, अगर आप अभी भी हम राउंड करके आगे, वी हैव अ यंग डॉक्टर in his 30s, 40s, he's battling with life. So many young people on ventilators and they're battling, and we're losing every day young people. So second wave जो चल रही है अभी, we are seeing young people getting affected more. अब कौन बच गए? बच्चे. So 0 to 18 years who are not even vaccinated. Vaccine is not there, indigenous vaccine.
सो इट इज़ प्रिडिक्टेड अगर थर्ड वेव आएगी, ये प्रिडिक्शन बेसिकली मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस. सपोज जो पैंडमिक के पास्ट आ गए हैं, सपोज स्पेनिश फ्लू आ गया, एशियन फ्लू आ गया, हांगकॉन्ग फ्लू आ गया है, या बाकी प्लेग आ गया है. बेस्ड ऑन दोज पैंडमिक्स वी हैड second wave, for example, in 1918 Spanish flu also, that was more deadly. On that basis and on the parameters, we had predicted a second wave. So it was more worse than, it is worse than the first wave, because iska reason yahi hai, because mutants have arisen, variants have arisen. So because of those variants, those have become more infectious, they have become more deadly. That is why you see second wave more severe than the first wave. Ab third wave is predicted on the basis of some parameters, infective parameters, past experiences, various parameters. So we predict a wave. Maybe there will be another wave after a few months, maybe in the fall, from September onwards, anytime in the fall we can have a third wave. This is a prediction. See, this COVID-19, the only predictable thing for COVID-19 is its unpredictable nature. But yes, predictions have come right also, it can come wrong also. But however, we have to be prepared for any eventuality. If experts tell us that third wave can come, we have to be prepared for third wave. So in third wave, it is expected कि बच्चे ज़्यादा affect हो जाएंगे. They will get affected and they may get affected severely. Who knows? तब तक अगर variants उस हिसाब से आ गए कि they will become more severe in children, we may have a severe COVID third wave and we may have COVID severely affecting children. हालांकि first wave में हमने देखा कि children were largely spared. Second wave में बच्चे हो गए infect, but it was not a severe disease. If third wave will come, it will be exclusively children, and God knows if the variants will be to that extent, they may become deadly on children also. That is why we have to be prepared. इसीलिए मैंने कहा कि the only way to avert, to avoid, to prevent the third wave is vaccination of children. बच्चों को वैक्सीनेशन कर दो. लेकिन वैक्सीन इंडिजिनस वैक्सीन कंट्री में नहीं है. वी आर येट टू स्टार्ट द ट्रायल्स ऑफ भारत बायोटेक को एथोराइज किया गया है. दे कैन गो अहेड विथ वैक्सीन ट्रायल्स इन चिल्ड्रन, बट दे आर येट टू स्टार्ट, क्योंकि इसमें फेज़ 2 फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स दे आर येट टू स्टार्ट. इट विल टेक फ्यू मंथ्स. लेकिन तब तक आप बच्चों को अनवैक्सीनेट नहीं रख सकते हो, बिकॉज इट्स डेंजरस. देन यू विल हैव a third wave. If you don't start vaccination now, we have a vaccine which has been approved in United States, Pfizer का बच्चों पे 12 to 15, they already were using their vaccine up to the age of 60. So if we import that vaccine, क्योंकि जब इंडिया बाकी मुल्कों में देता है, why can't they get the Pfizer vaccine here? Start vaccinating children till they have their own vaccine. That is the only way to avoid. So by start, because till then you cannot allow children to come out. देखो second wave has come. It can achieve peak, though it can achieve peak later than Maharashtra and Delhi, क्योंकि जो हमारी second wave थी that has come later in Kashmir. So we are expecting a peak maybe later than Delhi, later than Maharashtra. If they get the peak in this week, which is predicted, we may get next week our peaks. After the peak, then there is a decline. तब केसेस की तादाद डिक्लाइन. लेकिन इफ़ यू गो टू द जो मैथमेटिकल मॉडलिंग इन्होंने बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कमेटी है कल जिस पे मैं बात कर रहा था, उसमें दे हैव प्रेडिक्टेड कि दैट इन जुलाई you will have a decline of cases around 20,000 cases. So by July you will have the second wave will continue. So if that comes true, that modeling, that means we also will be having a decline of cases in July. That means we have still one more month. So the only way इस थर्ड वेव को आप अवॉइड कैसे करोगे? वैक्सीनेशन से. जितना आप वैक्सीनेशन ज़्यादा करोगे, जितनी तेज़ी से करोगे, one is that the number has to be more and in quick time. It's not that you'll do it another year then, because as long as you leave people unvaccinated, virus will go on attacking you and waves will keep on coming.
अगर ये wave जाएगी, you will have another wave. Not only the third wave, there will be so many fresh waves because you have enough people who are unprotected. Virus will go on and attack them. अगर सारे लोग protect हो जाएंगे by way of an vaccination, so virus will not find any host, so it will not attack, it will die its own death. उसके बाद pandemic will be over and it may just die down to become endemic. जिस तरह होता है फिर swine flu में वैसा ही हाल हो गया, ये पहले आ गया pandemic, जब ख़त्म हो गया it became endemic. So you find it coming every winter now, flu. So it can have a similar end. But till then, अगर आप vaccination नहीं करोगे तब तक you expect fresh waves. And God knows, तब तक you may have new mutants because once people get infected in the process, there is emergence of new mutants. And God knows this virus is behaving abnormally. So it's behaving differently in different populations, is behaving differently in different regions, is behaving differently in different individuals. That's why it's abnormal. The only predictable thing which this virus has, it is unpredictable nature. That is the only predictability, what I feel. So we should not take chance. We should vaccinate people quickly. That's the only way to do away with this pandemic. तब कहीं हमको इसका खात्मा नज़र आता है, तब तक मुझे नहीं लगता है इसका खात्मा होगा. डॉक्टर साहब, उसके बावजूद बात करें, व्हाट अबाउट ब्लैक फंगस? इट्स अ नाइटमेयर इन द पैंडेमिक. ये एक और आफत है अब जो कई दिनों से आप भी सुन रहे हो और and unfortunately it has taken epidemic proportions in the country. That's why it's now an epidemic. It has been declared by Government of India that it's an epidemic. And unfortunately we have the first case in Jammu and Kashmir. Aaj there are thousands of cases outside, so it's really an epidemic. A rare disease. मैंने अपने 35 years of my medical career, I've just seen few cases, 5 cases I was telling to other channel also. तो उनमें invariably they were seen in diabetics. लेकिन जब से ये COVID-19 की आफत आ गई है, इनकी तादाद बढ़ गई है. इसकी एक ये वजह है because most of the patients जो COVID-19 के जो diabetics थे उनमें ये पाया गया. And those who were receiving steroids. ये उनमें क्यों हावी होता है? बिकॉज ये जो कोविड-9 ये ब्लैक फंगस है, इट्स अ फंगल डिजीज़. इसका बेसिकली मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम मिकोरमाइकोसिस कहते हैं. और ये फंगल डिजीज़ इट्स एवरीवेयर इन द सॉइल, इन द एयर. Especially it thrives in decaying food and decaying vegetables, garbage, construction sites. Those are the breeding grounds for this virus. It is found in the hospital setting also, in the ICUs with the gadgetries. And healthy individuals के नाक में भी ये पाया जाता है. लेकिन ये healthy individuals में disease नहीं करता है. As long as you are immunocompetent, आपका immune system intact है, you will not get the disease. जब भी आपका इम्यून सिस्टम किसी भी वजह से, चाहे कैंसर होगा, चाहे लिवर डिजीज़ किसी को है, किडनी डिजीज़ है, या किसी को डायबिटीज़ है, ये all of these conditions basically decrease your immune system and you're vulnerable for this disease. So similarly COVID basically क्या करता है? It decreases your immune system. ये एक lymphocyte है जो immune system के लिए ज़रूरी है, उसको कम करता है. This fungus attacks you. So and once you have diabetes and then you give steroid, क्योंकि steroids हम COVID-19 को इसलिए देते हैं because it has been found to be life saving in COVID-19 patients. Or unfortunately because of the misuse of the steroids, we give excessive, we give large doses, we give for a prolonged duration, and we give at times in mild cases. Steroids have to be given in severe cases, but people are starting it early. Even जो है लोग खुद भी जाते हैं chemist shops पे steroid लेते हैं जब भी COVID positive. In initial stage and in mild stages it will do more harm. So that's why I say irrational use of steroids. उससे ये फंगस ज़्यादा हावी हो गया COVID-19 पेशेंट्स में. अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़. और जो आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो यूज़ करते हैं उसमें जो ह्यूमिडिफायर्स होता है, उसमें जो कंटेमिनेटेड वाटर है, उसकी वजह से भी काफ़ी पेशेंट्स इन्फेक्ट हो गए हैं बाहर. उनकी वजह से ये मिकोरमाइकोसिस आ गया. तो इसीलिए मैंने एक अलर्ट भी जारी किया था फ्यू डेज़ बैक कि दैट पीपल शुड बी अलर्ट बिकॉज वंस देयर वर केसेस आउटसाइड. और अलर्ट मैंने इसलिए किया था बिकॉज इट्स अ रेयर डिजीज़, पीपल हैव टू बी मेड अवेयर अबाउट दिस डिजीज़. क्योंकि उनमें पाया गया जो कोविड ज़्यादातर
कोविड पेशेंट्स जो ठीक होते हैं, रिकवर होते हैं, वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर जाते हैं, उनको लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन तब ये फंगस अटैक करता है उनको। और काफ़ी सारे पेशेंट जिनको ये फंगस हो गया है वो रिकवर्ड पेशेंट्स थे। हाँ, कुछ पेशेंट्स जो इन द एक्टिव फेज भी हैं उनमें भी ये पाया गया। तो इसलिए लोगों में ये ज़रूरी है कि दैट दे शुड नो अबाउट द सिम्टम्स कि ये जो फंगस है ये कैसे जाता है। इट कैन जस्ट गो फ्रॉम द एयर इनटू द नोज़ फर्स्ट, इट कैन गो टू द इट कैन इरोड योर बोन्स फेस की, इट कैन डिसफिगर यू, इट कैन इरोड योर ऑर्बिट एंड यू कैन लूज द साइट। जिस तरह हुआ, काफ़ी लोग ब्लाइंड हो गए, सम पीपल हैव डाइड जब ये ब्रेन में जाता है। It can go to the lungs and cause similar symptoms as COVID does. So that's why people have to know about its symptoms, so early symptoms. Suppose अगर आप रिकवर होकर घर जाओगे, you get an excruciating headache, you should think of mucormycosis. अगर आपको आई में पेन हो गई, you should think of that maybe I have got the fungus. अगर आपको numbness आ गई फेस में ना, सुन, तो you should think that maybe. अगर ये early symptoms आप pick up करोगे, and you consult a doctor, maybe we may treat you early and you will recover. But as long as it progresses, then it basically उस टाइम आपकी है कि नाक पे आपका ब्लैक जो है स्कार हो सकता है, you can have nasal discharge, blackish discharge, crusts, black crusts can come out from the nose, अंदर पैलेट पे भी black crusts हो सकते हैं। Then you can if you get it into the eye, you can have blindness, and if it goes into the brain, then you will have coma. If it goes to the lungs, you can have cough and breathlessness, similar symptoms जो आपके क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जो रिकवर होकर घर जाते हैं, उनको फिर से छाती में हो सकता है, they get the cough. Many patients, we should basically think of whether it is a fungal infection. तो इसका जो है ये कि कैसे आप बचाओगे अपने आप को कि इस फंगस से, COVID-19 पेशेंट्स, द बेस्ट वे इज़ नॉट टू हैव COVID-19. So that is by vaccination. Vaccinate yourself, you will prevent from COVID-19 and you will prevent yourself from the fungus also. और दूसरा है, those who are diabetic, they should absolutely keep their sugars in control. Monitor it, and if needed, you have to alter your medicines. Third is जो humidifiers हैं आपके, they should contain the clean water. ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जो होते हैं ऑक्सीजनेशन के दौरान, you should frequently change the water and you should decontaminate जो उनका होता है वो पॉट humidifiers का regularly. And very important is ये कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं ये ब्लैक फंगस क्या कंटेजियस है, अगर किसी को लत लग गई तो हमको, इट्स नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज़। अगर किसी को ब्लैक फंगस होता है तो अटेंडेंट कैन नर्स हिम, इट्स नॉट ए कम्युनिकेबल, इट डज नॉट गो फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आपको ये नहीं लग जाएगी, इट्स नॉट लाइक COVID-19. सो यू हैव अ ट्रीटमेंट इज़ कि अगर इस आपके ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो गए हैं कि दैट सपोज ये नाक हो गई तो ENT मैन कैन कम इन एंड डिब्राइड इट, सर्जरी कर सकता है। अगर आपको आई में गया तो जान बचाने के लिए वी माइट हैव टू रिमूव द आई ऑल्सो। दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट पिक दिस डिजीज़ अर्ली, ताकि आप अपने ऑर्गन्स को भी बचाओगे एंड वी कैन ट्रीट यू एंड यू कैन बी वेल। लेकिन अगर आपने देरी कर दी इसमें ना, इस ब्लैक फंगस को डायग्नोस करने में, मे बी वी मे नॉट हेल्प इट इवन वी ट्रीट इट। ट्रीटमेंट इसमें यह है, एक सर्जरी भी है और दूसरा एक ड्रग है एम्फोटेरेसिन B. That's an antifungal drug that has to be given injectable, and patients have survived if they come early. तो मेरी ये मैसेज यही रहेगी इस ब्लैक फंगस के हवाले से, इट्स अ रियलिटी, पीपल हैव टू बी मेड अवेयर अबाउट दिस डिजीज़, पब्लिक शुड नो अबाउट दिस डिजीज़। सिम्टम्स के हवाले से यहाँ पे मीडिया भी अपना काम करे ताकि पब्लिक सेंसिटाइज हो रहे इस बारे में, सिम्टम्स को उनको पता होना चाहिए कैसे इसको बचाया जाए, तो क्या सो दैट दे कम अर्ली टू द हॉस्पिटल एंड वी कैन सेव देम। और डॉक्टरों के हवाले से भी दे शुड बेसिकली बी सेंसिटाइज, क्योंकि डॉक्टरों ने भी ये ज़्यादा नहीं देखा ये ब्लैक फंगस, सो दे ऑल्सो शुड हैव heightened awareness and they should be also made aware about this disease so that in the hospital also they will pick this disease early and treat and save lives. थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, ये देखा आपने, डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे से समझाया हमें, आपको भी नाजरीन, हम होप करते हैं कि आपको भी अच्छे से समझाया, और जो इन्होंने बताया प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे हमें कंट्रोल करना है ब्लैक फंगस, हमें अगर कुछ सिम्टम्स आते हैं तो हमें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास आना है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है ये। तो उस हवाले से भी आगे भी आपको दिखाती रहूँगी ऐसी खबरें। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन उबाद मुख्तार को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।